अब चेक करती हूँ कि मेरी रिपीट हो रही है। ओके, एक बार मैं ईयरबड्स लगा लेती हूँ उसमें, फिर देखती हूँ कि क्या होता है। हेलो, अभी क्लीन आ रहा है? अभी रिपीट नहीं हो रहा ना? अब ठीक है। स्टार्ट प्लस फॉर्म इज कंप्लीट कर दूँ कि इस काम करते स्क्रीन शेयर करती हूँ। फर्स्टली इनका स्क्रीन शेयर। ओके, so I'm going to ChatGPT and start going to just anyway to okay, let me see how it should be. Okay, yes, um, so hello guys, after this time, if you all know me, आप सब अच्छे से जानते होंगे कि कुछ मैं कौन हूँ क्या है हर एक चीज। So today I am planning to do um, मैंने सोचा है कि अपन करते हैं। देखो मेरे पास दो रोड मैप है, दो चीज कर सकते हैं अपन। एक तो डेटा एनालिटिक्स का पार्ट कर सकते हैं अपन, और दूसरा एआई का। तो एआई में आपको लगेगा आपका पाइथन ओवरऑल पार्ट, एंड उसके अलावा आपका लाइब्रेरी सारे पाइथन नंपाई मैटप्लॉटलिब scikit-learn Seaborn। तो एग्जैक्ट अपन देखेंगे कि क्या क्या तो हमारा क्या बोलते हैं रोड मैप हो सकता है। जो फेमस रोड मैप है उसी को ही अपन फॉलो करेंगे फिलहाल तो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ एंड फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। इसमें मैं सेलेक्ट करती हूँ। Okay, just a minute. Okay, so I'll just do one thing. We're going to really good, so that's fine. So I will make हम ये निकालते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले अपन करते हैं न्यू चैटजीपीटी स्टार्ट है एंड आई विल सर्च द रोड मैप।
Um, ओके, तो मेनली ये हमें क्या रोड मैप दे रहा है डेटा एनालिटिक्स के लिए बेसिस बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक कवर कर लें। तो ये हमको ओवरऑल कितना बता रहे हैं, महीने का बता रहे हैं कि आप कितने महीने में कर सकते हैं। ओवरऑल हफ्ते हफ्ते से जोड़ के ये चीजें आपको करनी है। तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू इन वन नाइट एंड कंप्लीट दिस ऑल। अभी जस्ट एक तो आप लोग की जो है ना खुद को भी पढ़ना है, मेरा बस यही है कि खुद का रिविजन भी हो जाए और आपका भी हो जाए, तो साथ साथ चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, अपन कुछ भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम एक चीज फॉलो करने वाले थे कि अपना वो बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये जो लिखी हूँ तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पे अपन बनाते हैं क्या, पूरा बेसिक्स में अपन डॉक्यूमेंट्री करेंगे कुछ चीज़ों में। तो पहला अपना क्या है, बहुत सारे पेजेस खोल देते हैं, sometimes confuse हो जाते हैं। So hello guys, as you all know me, my name is Akhtar and you are watching Akhtar's channel, my channel, and actually मैं आपको अपना चैनल दिखा देती हूँ कि मेरा चैनल कौन सा है। So yeah, it's my channel. It's your मैं इसमें कंटेंट डालती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, लाइक कभी तो यहाँ मैंने भी वीडियो काम किए, अभी कुछ दिनों से गायब थी, उसके लिए सो सॉरी, बट अभी थोड़ा मेस्ड अप चल रहा था मेरी जिंदगी में, फन से उतार और चढ़ाव रहे थे। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम है तो व्हाई नॉट अभी तो भी कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बीच में रोक दिया था उसे। तो एक तो अब डेटा एनालिटिक्स करोगे आपको एक पार्ट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि डेटा फिल्टर करना वहाँ पे भी हम वही सेम चीजें कर रहे होते हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, बट यहाँ बेसिक से लेके एडवांस पर ऐसे स्लाइटली ऐसा फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। मौसम से दिख रही हूँ, आपको भी दिख रही हूँ, लाइक कंफ्यूजन था कि मैं सही से आ रही थी नहीं आ रही। तो जज में मैं बस ऐसे पढ़ी रहती हूँ घर पे। एंड चलो तो लर्न बेसिक, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड ये अपना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी स्टेजेस है हम लोग कहीं बोले 4 से 8 महीने की, ओवरऑल ये है, उसको मैं कवर करूंगी आज में, वॉचिंग डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। तो हम इस सबके थ्रू में आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप लोग एक वीडियो पे सब चीज मिल रहा है और सब चीज आप परफॉर्म करते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी हो जाओ, फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे अपन, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें सब कुछ डाल के लिया है। फेज 1 में अपन ये देखेंगे, लर्निंग बेसिक पार्ट। तो हमारा जो भी चीजें हैं हम उसके अंदर ही डालते जाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, लेट्स सी व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। तो ये हम चैट जीपीटी में यूज करेंगे, हम यूट्यूब यूज करेंगे। तो सबसे पहला चीज, मेरा लर्निंग का बस एक ही वो है, एग्जाम टाइम में सेमेस्टर टाइम में मैंने बस एक रूल फॉलो किया, एक रात पहले पढ़ने का। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ वर्क करता है, बट मेरे साथ डेफिनेटली वर्क करता था। मतलब मैं एक नाइट पहले पढ़ती थी ना, मुझे हर चीज एकदम कंठस्थ याद रहता था, मैं रात भर सोती नहीं थी। नेक्स्ट डे जब मेरा एग्जाम होता था, मैं रात भर बैठ के पढ़ती थी, और एग्जाम के होने के बाद मैं सो जाती थी अच्छे से, 7-6 घंटे की, 7-8 घंटे की सोती थी। तो वही चीज करते हैं आज, हम ये कर लेते हैं कि हमको ये सपोज आप मान लो आपका कॉलेज सेमेस्टर का एक सिलेबस है, उसको आपको कवर करना है, टोटल आपके इतने चैप्टर्स
और ये चैप्टर्स को आपको कवर करना है। आप ऐसे एक माइंड में बना लो थोड़े टाइम से कि हाँ, ये जो अपने जो पॉइंट्स है ये सबको कवर करते रहूंगा, ये जो मेन मेन जो पॉइंट है वो सब मुझे आने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। ज्यादा बात नहीं और हम काम पे आते हैं। हम डिफरेंट यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट चैनल्स को देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। सिंपल सा जो शॉर्ट में और इजी टू वे में आपको समझाते हैं, हम वैसा देखते हैं। तो मेनली मेरे पास एग्जाम टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं होता था और मुझे जल्दी वो चीज़ को समझना होता था, तो मैं शॉर्ट्स ही प्रेफर करती थी। सो लेट्स A data analyst does three things. The first is they identify the problem. What is the problem statement that the business is trying to answer, such as, was the product successful? Once the problem is identified, then they'll move on to data. Data involves identifying the data sets, cleaning it, analyzing it, and doing all of this using tools such as Excel, SQL, and Python. Now, the last is reporting. The data analyst will then take all their findings and present it to the stakeholder, ensuring that it is answering the business problem from the first step, which was the product successful? A data analyst does three things. The first is they identify the problem. What is the problem statement that the business is trying to answer, such as, was the product successful? Once the problem is तो ये क्या बोल रहे हैं भाई वीडियो में कि ये बेसिकली ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस बता रही है कि होता क्या है। सबसे पहले इसने क्या मेंशन किया कि व्हाट्स द डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट, क्या होता है डेटा एनालिटिक्स। आप लोगों को समझ आया, मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे बोलो कि क्या समझ में आया। तो सबसे पहले इसका क्या रहता है, आपको प्रॉब्लम एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहे हो, तभी तो आप डेटा में प्रॉब्लम से उसी को ही हम डील करते हैं। So second is the problem statement that the business is trying to answer, such as, was the product successful? Once the problem is identified, then they'll move on to data. Data involves so सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो हम प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, क्या प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मार्केट में सेल जा रहा है, हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं डेटा के थ्रू। तो सेकंड क्या करते हैं, हम डेटा करते हैं उसको identifies the आइडेंटिफाई data करते set, हैं। cleaning it, analyze. सपोज हमारे को डेटा मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है हमको, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से मिलता है। एक तो वेब से मिल जाएगा आपको, या फिर कोई एक्सेल फाइल मिल जाएगा, या फिर समथिंग जोशन में मिल जाएगा आपको डेटा। अब वो सबको स्टोर करके क्या करना है आपको, एक्सेल में डालनी है, देन उसको कन्वर्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। समटाइम डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, इधर उधर मेस्ड अप होता है, तो आप क्या करते हो, उसको क्लीनिंग करते हो, अरेंज करते हो, सॉर्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, देन एनालाइज करते हो आप उसके। Analyzing it and doing all of this using tools such as Excel, SQL, and Python. Now, तो ये बता रही है कि ये सब प्रोसेस डन करने के लिए हम टूल का हेल्प लेते हैं। सबसे बेस्ट टूल है एक्सेल, दूसरा हो गया एसक्यूएल, तीसरा हो गया पाइथन। पाइथन एंड एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल आपका होता है क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज which is easy to read also because it's basic English words in Python. So I think basically आपका splitting data analytics and major things to is one of the things. Then हम समझ आ गया data analytics का बहुत so आगे बढ़ते हैं। the last is reporting. The data analyst will then मैंने समझ लिया प्रॉब्लम है, समझ लिया डेटा को, समझ लिया तो उसके हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, डेटा रिपोर्ट take करते हैं। all their फिर findings रिपोर्ट बनाने के लिए हम एनालिस करते हैं और ये एनालिटिक्स पार्ट के लिए तो हम उसमें भी इजीली हम ग्राफ वाफ के थ्रू हम अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि एक ग्राफ कहाँ जा रहा है, और एक डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। and present it to the stakeholder, ensuring that it is answering
एंड सबसे बेस्ट वे प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ बना के the business problem from the first step, which was the product successful? A data analyst. ओके हमें समझ आ गया व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स लेट्स डू द अनदर वन इसे क्या करते हैं तो मेरे को समझ आ गया क्या होता है डेटा एनालिटिक्स तो मैं जस्ट रीड कलर मैं कर देती हूँ ग्रीन कलर क्योंकि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया सो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है सबसे पहले स्टैटिस्टिक पार्ट समझते हैं देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप चाहो तो साइड बाय साइड बना सकते हो मैं अभी ऑलरेडी ऐसा कर रही हूँ साइड बाय साइड जैसे ये मैंने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया देन उसके बाद एक साथ मैं नोट्स बना के इसके जस्ट नीचे प्रिंट कर दूंगी और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी अलग से ताकि आपको भी हेल्प हो बाद में गो थ्रू से आपने पढ़ा तो उसको रिवीजन करने के लिए और मेरे को भी इनफैक्ट मैं भी पढ़ रही थी अब जाते हैं यूट्यूब पे सॉरी मेरे को मुझे कहाँ गया मेरा यूट्यूब यार अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता सोचती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कर लूँ फिर आपके साथ पढ़ा जाए सोच रही हूँ तो लेट्स डू इट देखते हैं क्या होता है सबसे पहले हमें को समझना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स समझते हैं कि क्या होता है उसका वो छोटा वीडियो देखते हैं ताकि हमको बोर करना हो कि बहुत बड़ा मिले छोटे में ये हमको स्टैटिस्टिक्स अच्छा बता रहे हैं ओके What is statistics? Statistics can be defined as the collection and interpretation of data. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, hair color, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. There are two kinds of statistics. There's inferential statistics and there's descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make judgments or claims about a population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like the average midterm score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. The first part of the course helps us use here. Slide 28. Collection and interpretability data. All around the world, statistics can be defined as the collection and interpretation of data. The collection and the collection and the interpretation of data क्या होता है the collection and interpretation of data ये हमारा statistics होता है All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, hair color, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. These things have different. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, hair color, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. There are two kinds of statistics. There's inferential statistics and there's descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make judgments or claims about a population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like the average midterm score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. Okay, The first part, दो टाइप की स्टैटिस्टिक होता है एक तो इंटर ये होता है और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव और इंटरनल स्टैटिस्टिक्स दो टाइप के स्टैटिस्टिक होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो बार ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है part of the course deals with descriptive statistics, and the second part of the course deals with inferential statistics.
In order to understand statistics, you'll first have to know some basic definitions. A population refers to the total amount of things. I say things because a population can refer to almost anything. This can refer to the total amount of people, cats, vehicles, houses, and so on. Now, a sample refers to a small part of the population that is used for study, and the total amount of things in a sample is called the sample size. In statistics, what we examine is a variable. It is what we are studying, and it can be measurable, countable, and categorized. When we talked about how people can have different heights, weights, and hair color, these are all variables. Variables represent a characteristic of what we are trying to study, and they can vary among different individuals. When we measure a variable, our data can come into two different forms. There is categorical data and there is quantitative data. Quantitative data refers to data that is measured in numbers. It deals with numbers that make sense to perform arithmetic calculations with, like calculating an average. Quantitative data comes from quantitative variables. Examples include height, weight, and midterm score. On the other hand, categorical data refers to values that place things into different groups or categories. Categorical data comes from categorical variables. Examples include hair color, type of cat, and letter grade. There Okay, so statistical में हमारा बता रहा है variable के दो टाइप होता है एक तो होता है आपका qualitative data और दूसरा होता है categorical data qualitative data क्या होता है a data that measure a distinct number जो qualitative data होता है ये numbers में measure करता है it still get a number that makes sense to perform arithmetic calculation जो arithmetic calculation को solve करने में मदद करता है इसमें आपका आ जाता है जैसे कि हाइट हो गया वेट हो गया ये सब चीजें या फिर मिड टर्म स्कोर हो गया मतलब कुछ भी नंबर में जो भी चीज है वो उसमें आ जाएगी ठीक है अब कैटेगरी डेटा क्या होता है कैटेगरी डेटा इज समथिंग व्हिच इज यूज फॉर थिंग्स ऑब्जेक्ट ये सब चीजों में उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं ठीक है वेरिएबल तो इसमें आपका आ गया रिफर्स टू अ वैल्यू ऑफ अ प्लेस things into a different group and categories जैसे कि आपका होगा hair color, type of cat, letter या grades वो सब चीजें हमारे कैटेगरी में आते हैं तो दो टाइप के हमारा ये होता है एक हमारा होता है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा हो गया हमारा कैटेगरी कैटेगरी डेटा ठीक है अब उसके अंदर हमारा इसमें क्या क्या है नंबर से सब आते हैं और इसमें आ गया हमारा थिंग्स या ऑब्जेक्ट जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो गया हेयर कलर टाइप ऑफ कैट और क्या हो गया आपका लेटर 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 सॉरी इसमें नंबर ही हो गया हाइट वेट स्कोर There are actually two types of categorical variables. There's categorical and ordinal and categorical and nominal. Something is said to be categorical and ordinal if there is a logical ordering to the values of a categorical variable. A good example of this would be letter grade. We can logically order the values of this categorical variable from high to low, or from low to high. Now, something is said to be categorical and nominal if there is no logical ordering to the values of a categorical variable. An example of this would be hair color. Depending on our sample, we could have people with red hair, blonde hair, brown hair, or even blue hair. Although we can arrange these values in alphabetical order, there is no logical ordering with respect to the actual values itself. There are also two types of quantitative variables. There is discrete and continuous. Discrete variables refer to variables that can only be measured in certain numbers. An example of this is the number of pets you own. You can own 0 pets, 1 pet, 2 pets, or even 30 pets, but it's impossible for us to own 2.7 pets. In contrast, continuous variables refer to variables that can take on any numerical value. An example of this would be weight.
Someone can weigh 105 pounds, 185 pounds, or even 170.683 pounds. We can measure this variable in as many decimal places as we want, which is why it is classified as a continuous variable. So to recap, a population refers to the total number of things. A sample refers to a small part of the population that we examine and extract information from. The total number of things in a sample is called the sample size. What we measure from each individual is the variable of interest. The way we measure these variables lets us know if the variable is quantitative or categorical. For example, if our variable of interest was midterm scores for statistics, we would have quantitative data if we measure each individual's test score. If instead we decide to place people into categories based on letter grade, then we would be working with categorical data. Okay, so what is this one? This was needed console. Yes. Um, oh, so yes, last year I discussed Nikon. So my supervisor hockey and the principal subject हमारे में is statistics नीचे कि क्या होता है हमारा actually. Okay, so today is एक सौ Yes. Yeah, the time it's सभी को समझते हैं ज़रूरत पड़ेगी एक रात में कवर करना it's not that much people okay should I understand how many हमें को
मीन मीडियन क्या होता है, लिखो सारे क्या होता है। ये हमको बता रहे हैं और क्या होता है। In this video, we will be looking at the mode, median, mean, range, and standard deviation. In the last video, you saw how we can display a data set using things like histograms, stem plots, and pie charts. We use these diagrams to help us visually display a data set. However, there is another way we can describe a distribution, and that way is by using numbers. The mode, median, mean, range, and standard deviation give us numerical information about the distribution of a data set. Specifically, the mode, median, and mean are measures of center or central tendency, and the range and standard deviation are measures of spread. We will look at how we can determine the measures of center first. So suppose I took a random sample of 9 people and measured their heights. Now the mode of the data set refers to the data value that is most frequently observed. Notice how the number 154 appears 3 times in this data set. This means that the mode of this data set is equal to 154. Now the median refers to the data value that is positioned in the middle of an ordered data set. Students often forget that to find the median, your data must be first put into order. We usually order the data set from smallest to largest. We can clearly see that the number 154 is in the middle of the data set because there are 4 data points above it and there are 4 data points below it. So the median of this data set is equal to 154. When a data set is extremely large, it might be helpful for us to use the formula n plus 1 divided by 2. This formula tells us the position of the median. N refers to the total number of data values in our sample. We have a total of 9 values in our sample, so n is equal to 9, and 9 plus 1 is equal to 10, and 10 divided by 2 gives us 5. As a result, the median is equal to the value in the 5th position, which is equal to 154. Note that we could have counted from the bottom and we would still get the same answer, as long as the data set is ordered. We always use the formula n plus 1 divided by 2 to find the position of the median. When we have an odd amount of data values, the median will always be apparent. However, if n is an even number, we see that we have 2 middle data points, and if we use the formula, we end up with 5.5. We see that there isn't a value in this position, so what we do is we take the arithmetic average of the 2 values beside this position. So we would have 154 plus 155 divided by 2, and we get an answer of 154.5. This value is in fact the value of the median for this data set. The last measure of central tendency we will talk about is the mean. The mean is just another name for the arithmetic average. The formula of the mean is as follows. It is equal to the summation of all data values divided by the total number of data values. If our mean comes from a sample, we call it x bar. So to get the mean for this sample, we add up all the data values, and since there is a total of 10 values, we will divide by 10. As a result, we get a mean or x bar of 165.6. Let's quickly compare between the median and the mean. Both of these are measures of center, but they measure center in a different way. The median refers to the physical middle point. So for this data set, the median would be equal to 12. Now the mean can be thought of as the balance point. If you calculate the mean for this data set, you would get a value of 10. If these people were of equal weights, this is the position in which a seesaw would be balanced. Now let's talk about the measures of spread. This includes the range and standard deviation. Both of these values measure spread in a different way. The range is simply the maximum minus the minimum, so it tells us how much room a distribution takes. In this data set, the range is equal to the largest number, which is 196, minus the smallest number, which is 139. As a result, the range is equal to 57. Now the standard deviation is computed using this formula.
The formula looks a little complicated, but the calculation for the standard deviation is simple. We will calculate the standard deviation for the following dataset. I will create a table to help me with my calculations, and this table corresponds to the numerator of the formula. Notice how x bar is contained within the formula, so we should calculate this first. You should find that the mean is equal to 15.4. The formula says we need to subtract each value from x bar, so we do this on the table. 10 minus 15.4 is negative 5.4. 12 minus 15.4 is negative 3.4. 16 minus 15.4 is 0.6, and so on. The next step is to square what we have just calculated. Negative 5.4 squared is 29.16. Negative 3.4 squared is 11.56, and so on. The next step is to find the sum of what we have just calculated. You should find that this is equal to 75.2. Remember that we used this table to calculate the numerator of the formula, so we can now replace it with 75.2. From here, the formula should be pretty straightforward. N refers to the total number of data values, and there are 5 data values in this dataset, so N is equal to 5. We can simplify this, and we end up with a standard deviation that's equal to 4.336. Now, ये सब कैसे आया ये ओवरऑल समेशन बोला था ना ओवरऑल एवरेज जो भी आया इसका इसका स्क्वायर तो वो ठीक है और 5 minus we can simplify this, and we end up with a standard deviation that's equal to 4.336. Now, solve करिए कर लेगा What does the standard deviation even tell us? The standard deviation tells us how close the values in the dataset are to the mean. For example, a small standard deviation indicates a small amount of variability for a given dataset. In other words, there will be a lot of values that are closer to the mean, which makes the distribution less spread out. In contrast, a high standard deviation indicates a high amount of variability for a given dataset. In other words, there will be a lot more values that are farther from the mean, which makes the distribution more spread out. The last thing we will talk about is variance. Variance is closely related to the standard deviation. The only difference between these two formulas is that the standard deviation involves taking the square root of the calculations, and for the variance, we don't take the square root. Also, notice how for the standard deviation, we denote it as s, and for the variance, we denote it as s squared. Both of these can be referred to as the sample variance and the sample standard deviation. समझ आया आप लोगों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे तो अपना ये टॉपिक हो गया एक काम करती हूँ लिंक ही प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग के बाद में देख सको बाकी जो है एंड नोट से बना सकते हो अपने पास में इसी में कंट्रोल 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 लिंक ये गाने का ये हो गया स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी अपन पढ़ लिया ये क्या होता है एटलीस्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है पूछे अल्टर बच्चे बता सकते हो अब प्रोबेबिलिटी क्या आता है अगर उसको करना है तो उसको अपने से और देखिए बट जो भी फॉर्मूला ये करा था इसका ऐसा कोशिश करो बाय बाय भी हो जा सकती है आपको बार बार से छान के नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या मेरा टॉपिक क्या तो मैं ये बोलूँगी टॉपिक मेरा था कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक मुझे जानना था कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी होता है व्हाट इट्स ऑल अबाउट तो लेकिन मेरा ये कैच करना है इसकी माइंड से निकल सकते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी A probability of 0 means there is a 0% chance of the event occurring. It's an impossible event. On the other hand, a probability of 1 tells us there is a 100% chance of the event occurring. It is a certain event. That brings us to an important point in the video. The probability of every event will lie between 0 and 1 inclusive. But how is it actually defined? What is probability? Let's call it P. The probability of an event occurring is the number of ways in which an event can occur over the total number of possible events. Number of ways. तो इसको नोट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ वे एंड
event can occur, ठीक है, upon total possibility event, ये हमारा probability. Based on event occur over the total number of events. हम्म, To understand this well, we look at three examples. First, the toss of a fair coin. It can either land a head or a tail. ये सबसे फेमस एग्जांपल है कॉइन को टॉस करना हेड और टेल में. This carefully. We toss a fair coin. What is the probability that it will land a head? Which is tossing one coin. What is the probability that we will get a head? What is the number of ways in which we can get a head? There's only one way, and that's if it lands a head. And what are the total possible events? We can get a head or a tail. Two total events. So the probability of getting a head at the toss of one fair coin is 1 over 2 or 50%. What is the probability of getting a tail then? It's also one by There's only two. one way in which we can get a tail, and there are two possibilities. Hmm. Probability of getting a tail at the toss of a coin is also 50%. Hmm. Now let's look at the case of a fair die. If we roll a fair die, it will land one of these 6 numbers. See, हेड और टेल वाले में क्या हो रहा था, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो पॉसिबिलिटी क्या है दोनों में से एक आने की, 50-50 की है. तो भाई हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2 दैट इज इक्वल टू 50 एंड टेल आने की मतलब 1/2 दैट इज इक्वल टू 60. एंड डाई का क्या होता है, डाई में हमारे टोटल कितने कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो 6 फेजेस होते हैं अपने. ठीक है, तो हमारे टोटल चांसेस कितने होंगे, टोटल पॉसिबिलिटी इवेंट 6 होगा. एंड एक आने की कितनी होगी, 6/1 की होगी. What is the probability that a die will land a 3? This one's easy. There's only one way in which we can get a 3, and there are a total of 6 possibilities. The probability of getting a 3 at the roll of a die is 1 over 6. It's slightly on the lower side. Okay, so what would be the probability of getting an odd number at the throw of a fair die? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑड, जो 2 के टेबल पे नहीं आता. 1 3 5 7 7 तो वही करता, 5 तक चलते हैं. तो ये हमारा ऑड हो गया. There are 3 ways in which we can get an odd number, and there are a total of 6 possibilities. So the probability of getting an odd number at the throw of a fair die is 3 over 6 or 50%. In the last example, ऑड आने की हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी ओवर 6. तो इसको भी हम काट देंगे 1/2 ही हो जाएगा ये भी. it's kind of a pack of cards. Let's assume a pack of 52 cards. Say we pick a random card from this pack. What? और हमारा 2 एग्जांपल ऑलरेडी हो गए, ये हमारा तीसरा है. तीसरा में हम लोग लेके चल रहे हैं जो ताश के पत्ते खेलते हैं उसके. तो आप लोगों को बेसिकली ये तो पता होगा कि ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं. ताश के पत्ते होते हैं आपके 52 कार्ड्स होते हैं. अब उसमें देखते हैं कि कौन सा क्या क्या डायमंड का कौन What सा is the क्या probability that we will pick a jack? Think logically. How many jacks are there in the entire pack? There are 4 jacks, one in each suit, and the total number of cards is 52. The probability of picking a jack from a pack of 52 cards is 4 over 52. Just the last question in the session. What is the probability of picking a space card? फेस कार्ड क्या होता है, कितना प्रोबेबिलिटी है फेस कार्ड आने की, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कितने हैं. There are 12 face cards. Jack, queen, and king in each of the 4 suits. सो होता है हमारे फेस कार्ड क्या होता है, जैक होता है, क्वीन होता है और And the total number of possibilities is 52. So the probability of picking a face card from a pack of 52 cards is 12 over 52. These are the 3 most common types of problems seen in the exams. In the तो वैसे हमको बेसिकली हमको समझना था प्रोबेबिलिटी क्या होता है. आई होप आपका अच्छा आइडिया लग गया. और प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होता है, और इवेंट बताते हैं, नंबर ऑफ वेज टू ऑकर इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी इवेंट. ठीक है, तो इसका भी हम क्या करते हैं, लिंक को कॉपी कर लेते हैं ताकि आप पढ़ने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े. जल्दी से जाएं और इस लिंक को देखें, हो जाएगा तो ऐड कमेंट में करो. इस वीडियो को अगर आप चाहो तो कमेंट्स करके देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ना लगे. ये भी हमारा वीडियो है तो उसको हम कर देते कलर. अब ये दोनों चीजें देखनी है अपने को क्या क्या होता है. करेक्शन करेक्शन क्या होता है,
This video provides introduction to correlation. Before we dive in, we mentioned previously that stats cheat sheet covers a lot of key concepts. You can find one at evolvement.com. So correlation is used to understand the relationship between variables. An example, maybe This time already passed and it's supposed to be completed. Okay. What else we need? we want to understand the relationship between the amount of rain we receive and key concepts. You can find one at evolvement.com. So correlation is used to understand the relationship between variables. An example is maybe we want to understand the relationship between the amount of rain we receive and the number of raincoats that are sold. And so what you could do is measure those things for 20 or 30 days and then plot them out in scatter plot like this. And you can see based on this example, it looks like the relationship is positive. As there's more rain, there tends to be more sales of raincoats. So the way that we really measure correlation, we quantify it, is using the correlation coefficient. So that measures the strength of relationship between variables. And we call this R, correlation coefficient. And it's always going to be somewhere between -1 and 1. And -1 is strong negative. So when one goes up, the other tends to go down. On the right-hand side, strong positive, as one goes up, the other goes up as well. Now, if you're right in the middle, there's little or no correlation or relationship between these variables. So here's an example of some positive and negative correlations by their correlation coefficients. And so you can see in the case of stronger correlations, either closer to 1 or -1, the points are closer together. They look more linear. As those numbers get weaker, the data points start to spread out and the relationship is not as clear. So let's take a look at an example. Let's think about the basketball player LeBron James and his field goal percentage. So his field goal percentage is based on how many times he shoots it. What percentage is he actually? Normally, positive, negative, neutral, no correlation. कोरिलेशन मतलब आपका रिलेशन बना के ग्राफ बनाता है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है नेगेटिव वे में जा रहा है क्या हो रहा है तो ये वो होता है ठीक है कोरिलेशन so what is correlation actual definition What is correlation? Correlation is defined as the association, closeness, or relationship between two quantitative variables. कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज आती है। अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आती। कोरिलेशन की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूज किया जाता है। कोरिलेशन की रेंज होती है 0 to +1 एंड 0 to -1। कोरिलेशन की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड जैकेट सेल्स है, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाती है और अगर टेम्परेचर कम होता है तो जैकेट्स की सेल्स कम हो जाती है। व्हाट इज कोरिलेशन? Correlation is defined as the association, closeness, or relationship between two quantitative variables. Correlation का मतलब है कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ तो होगा आपको समझ आ गया कोरिलेशन क्या होता है एक्चुअली और वो कैसे हम देखते हैं एग्जैक्टली ग्राफ और जो दोनों साइड से हम उसका देखते हैं कि क्या रिलेशन बैठा रहा है जैसे इसमें अच्छा एग्जांपल है टेम्परेचर जैकेट सेल्स का अगर हम गर्मी रहती है तो हम जैकेट्स नहीं ले जाते तो अकॉर्डिंगली उसका क्या होता है लॉस होता है और जब टेम्परेचर कम होती है तो हम जैकेट परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा उसका ग्राफ बढ़ेगा ओके आई होप समझ आ गया होगा क्या होता है रिलेशन इट्स वेरी इजी यहाँ पर देखते होंगे अच्छा हाँ लिंक देखा था क्या आई होप इसमें लिंक की जरूरत नहीं है चलो फिर भी लिंक बोला है मैंने बता के डालिए इस टाइम कंसिडरिंग आई थिंक कोई लिंक डाल दो पूरा व्हाट करना पड़ेगा अब ये टेस्टिंग इसी का बोला था 102 हफ्ते वाह 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 ये तो हमने अभी सीख लिया
जिस कुछ मिनटों पे बस आप इसका एक नोट बना लेना, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको थीसिस टेस्टिंग Let me explain the intuition behind hypothesis testing in just 1 minute. के In लिए। hypothesis testing, we begin with an assumption called the null hypothesis. For example, we might assume that the average height in Delhi is 5 feet. Then we create an alternative hypothesis suggesting that the average height is not 5 feet. But how do we test these assumptions without? तो लोग थोड़ी पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट उसमें मेरे से दिक्कत ये हो गई कि मेरा जो स्क्रीन है वो मैंने इसमें थोड़ा दिखना था, छोटा दिख रहा था, फिर से तो नहीं कर दूंगी मैं आपको शेयर कर दूंगी डिटेल्स, आप इसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी दूसरा कोई स्क्रीन तो नहीं था। आपने जो टैब में दिखाना चाहते हैं एक तो ये और दूसरा ये एक बार मैं एक्सप्लेनेशन सुनिए। So you can see this. Hypothesis testing. Let me explain the intuition behind hypothesis testing in just 1 minute. In hypothesis testing, we begin with an assumption called the null hypothesis. For example, we might assume that the average height in Delhi is 5 feet. Just a Then minute. we create an alternative hypothesis suggesting that the average height is not 5 feet. But how do we test these assumptions without measuring everyone in Delhi? For this, we take a smaller group, let's say 1,000 people, as a representative sample, ensuring it represents the largest population in India. Now, using data from this sample, we test our hypothesis. If the data from our sample suggests that the average height in Delhi. So what do you understand by hypothesis testing? Hypothesis testing क्या होता है? हम वो दिखाना हमारा टॉपिक ही वही है। एक मिनट में एक और चीज कर लेता हूँ। मैं नाम लिखता हूँ, स्क्रीन शेयर और तो दो चीजें सेलेक्ट करने को दिखाने कर रही है। जस्ट a minute, मैं just एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरे को समझ आ जाएगा ना कि लाइक वो क्या रहा है प्रॉपर। Is different from 5 feet, we draw a conclusion. And this entire process is called hypothesis testing. Outcome could be either accepting the null hypothesis or rejecting it in favor of the alternate hypothesis. Let me explain the intuition behind hypothesis testing in just 1 minute. In hypothesis testing, we begin with an assumption called the null hypothesis. For example, we might assume that the average height in Delhi is 5 feet. Then we create an alternative hypothesis suggesting that the average height is not 5 feet. But how do we test these assumptions without measuring everyone in it? For this, we take a smaller group, let's say 1,000 people, as a representative sample, ensuring it represents the larger population in India.
Now, using data from this sample, we test our hypothesis. If the data from our sample suggests that the average height in Delhi is different from Okay. हाइपोथेसिस होता क्या है मेरे को अभी वीडियो से नहीं समझ में आया लेट्स ट्राई डिफरेंट और ये थोड़ा सा लग रहा है प्लीज को ट्राई टू स्टेट फास्ट What is hypothesis testing? Hypothesis testing is used to determine whether there is enough evidence in a sample of data to infer that a certain condition is true for the entire population. Therefore, it is a method to test an assumption or theory about a parameter of the population based on a sample. What is the population and what is the sample? The population is the whole group we're interested in. If you want to study the average height of all adults in the United States, then the population would be all adults in the United States. The sample is a smaller group we actually study, chosen from the population. For example, 150 adults were selected from the United States. And now we want to use the sample to make a statement about the population. And here are the 6 steps how to do that. Number 1, hypothesis. First, we need a statement, a hypothesis that we want to test. For example, we want to know whether a drug will have a positive effect on blood pressure in people with high blood pressure. But what's next? In our hypothesis, we stated that we would like to study people with high blood pressure. So our population is all people with high blood pressure in, for example, the US. Obviously, we cannot कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुमको समझ आ रहा है क्या आई डोंट थिंक सो मुझे नहीं आ रहा तो तुमको समझ आएगा यार प्लीज यहीं से यही वर्ड में कुछ बात करो क्या बात कुछ तो बता यार ये ब्लड टेस्ट टेस्ट फलाना टेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे रिलैक्स है मैं समझा इमेजिन कर तेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि जब तू अपसेट होती है तो उसके जोक से तेरा मूड ठीक हो जाता है लेकिन उसके जोक से तुम और डिप्रेस हो जाती हो बट उसे समझ नहीं आता हाँ तो बस यही तो चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम सबसे पहले ओपिनियन यानी नल हाइपोथेसिस बनाते हैं Okay, one thing and the keyest thing is हम hypothesis testing में null क्या बोली थी null hypothesis बनाते हैं उसके जोक से तेरा मूड ठीक हो जाता है तो अब तू नोट कर कि ऐसा कितनी बार होता है कि तेरा मूड आउट हो तेरे बॉयफ्रेंड की जोक से तेरा मूड ठीक हो जाए तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बार सही निकली तो मतलब मेरी हैप्पीनेस का रीजन मेरे बॉयफ्रेंड की जोक से हो इस टेस्ट को सिग्निफिकेंटली वैलिडेट कर सकती है इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो अब या तो तेरी नल हाइपोथेसिस सही होगी या फिर अल्टरनेटिव तो वेट मत कर ओके इस चीज से मुझे इस चीज को समझ आया कि हाइपोथेसिस दो टाइप का होता है एक तो null होता है और एक तो अल्टरनेटिव होता है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के जोक से डेटा कलेक्ट कर फॉलो फॉर थैंक यू दीदी आपने अच्छा ही समझाया एज कम्पेयर टू सब्सक्रिप्टिव तो मेरा आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ तो एक और मैं कर लेती हूँ क्या आपने कभी सोचा है रिसर्चर्स कैसे प्रूव करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं फर्स्ट कीजिए यू हैव टू प्रूव दैट स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर this particular diet leads to weight loss. So how the researchers prove whether something exists or not? It is done through a process called hypothesis testing. There is a battle between HO, which is null hypothesis, and alternative hypothesis, which is also called researcher's hypothesis. In the next 60 seconds, let us learn about null hypothesis, alternative hypothesis, and what is hypothesis testing. In very simple terms, in research, you establish a relationship between two variables. मार्केट में एक नई तरह की दवाई आई है. You establish a relationship between this medicine and the body temperature. There are two kinds of hypotheses. One is null hypothesis and other is alternative hypothesis. Null hypothesis, which is also H0, ये एक बहुत ही उदास और शक्की बच्चा होता है हर ग्रुप में जो हर चीज के लिए मना करता है जो हर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं मानता इसके अनुसार कोई भी चीज घटती है तो वो एक मेरली फ्लूक होता है तुक्का होता है this particular diet does not lead to weight loss and then there is alternative hypothesis which is researchers hypothesis which is denoted with H1 which suggests that there exists
a certain kind of relationship between two variables. ओके समझ आ गया आगे This देखो diet leads to weight loss. In hypothesis testing, there is a आपने बहुत मेहनत की बट पहले वाली कितनी ज्यादा अच्छा समझा रही थी हमको दो चीजें समझ आई हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं टनल होता है और एक अल्टरनेटिव होता है अब मुझे नहीं लगता यूट्यूब में हमको अच्छे से समझा सकते हैं तो लेट्स ट्राई इसको चैट जीपीटी को ट्राई करते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेरे को मुझे पता नहीं मैं चैट जीपीटी वरना मैं कुछ नहीं कर सकती पानी पानी कर सकती थोड़ा फन कर लेते हैं वो हाइपोथेसिस क्या होता है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कि हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ओके 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 मेनली हम पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं जैसे कि our website new design increase the conversion rate के आधार से बढ़ गया तो you collect the data from the users and after the redesigning hypothesis testing help us to um, deduct the whether the improvement is real or just random chance. Okay. और दो टाइप का होता है hypothesis जैसे कि बताया गया एक तो null होता है और दूसरा होता है अल्टरनेटिव जिसको हम बोलते हैं H1 या फिर H H क्या होता है um, the default assumption that there is a no effect or no difference. The new website does not increase convenience. Okay, तो ये आपका फॉर्मूला होता है इसे आपको क्या करना है अल्टा मान लेना सिंपल सी बात अगर पूछेगा तो ये बता देना एंड उसका सिंपल सा आपका ये हो गया उसका डेफिनेशन डिफॉल्ट एक्सेप्शन देता है और कोई इफेक्ट नहीं करता कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता उसको हम किसको लेते हैं नल हाइपोथेसिस लेते हैं जिसमें आपका h0 is equal to mu none and is equals to mu two ठीक है अब सेकंड वाला क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम बोल सकते हैं h1 या फिर h0 it depends to you आप क्या बोलना चाहते हो the claim you want to test यदि claims are उसको आप टेस्ट करना चाहते हो जैसे एग्जांपल new website does not increase conversion तो ऐसा हो सकता है mu one से ज्यादा बड़ा mu two to the significant alpha इतना डीपली करने की जरूरत नहीं है कलेक्टिंग सैंपल डेटा जैसे कि ये सारा का डिफॉल्ट अरे डिजाइन आप करते हैं थाउजेंड विजिटर्स थे 100 परचेज थे कन्वर्शन कितना हुआ 10% हुआ हाँ क्योंकि 1000 विजिटर उन्होंने विजिट किया बट कन्वर्जन लिया तो बहुत कम था 100 में परचेज किया तो कितना हो रहा है हाफ ही हो रहा है जस्ट 10% हाफ थोड़ी छोटा सा हिस्सा हो रहा है आफ्टर रीडिजाइनिंग क्या हो रहा है आपका कि 1000 लीटर थे उसमें 130 130 परचेज हुए तो कन्वर्जन आपका कितना हो रहा है बढ़ के 13% हो रहा है ओके तो ये क्या डेटा कलेक्ट स्टार्ट हो गया डेटा सेंटर डेटा को आपको कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जेड टी ये सब आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स का कैसे कैलकुलेट करते क्या है उसमें फाइंड द पी वैल्यू यार इतना तो मेरे ख्याल से इतना टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है rather than जितना कि आपको फिजिकली उस चीज की जरूरत ना पड़े तो मेरे ख्याल से डॉक्टर जान लो कि क्या होता है कितने टाइप का क्या चीजें होती है तब आगे बढ़ो तो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब लिंक तो मुझे बस समझ नहीं आ रहा देख लेना बाकी हमने पढ़ लिया है ये हमें जान लिया कि इसमें दो टाइप होते हैं उसके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं फॉर्मूला रो लिया रखते हैं एक और वीडियो था जिसको हम कोशिश कर सकते हैं तो थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी आपको समझाया हम इसको ले सकते हैं रेफरेंस के लिए इसमें थोड़ा बताया कि कैसे कैसे चीजें होती है बाहर आई डोंट थिंक सो मुझे बोरिंग नहीं लगा ये वही रूल बताएंगे कि क्या होता है तो हमने इसे देखा हाइपोथेसिस टेक अ सैंपल देन टेस्ट करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मान लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बस इतना याद रखो हो गया खत्म
और उनका नॉर्मल आप मेरी टेक्निक बता रही क्या और मतलब मैं खत्म कर रही मूव कर लेना। देन हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सेकंड पार्ट का अलग से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो सेकंड हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। इफ इजी लुकअप बेसिक फॉर्मूला, आई थिंक आपको सेल पता होगा, रो पता होगा, कॉलम पता होगा, ये सब मैं मार्क कर लूँगी, आपको सब चीज़ें पता होगा कि क्या क्या होता है। सेल क्या होता है, जैसे कि आपको प्रोडक्टिव वाला होगा, हर एक जो ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, ये टेबल पे। एंड देन इफ फॉर्मूला लगाना, लुकअप फॉर्मूला लगाना, सेल लगाना, टेक्स्ट मीडिया, ये सब चीज़ें, सॉरी टेक्स्ट इंडेक्स मैच, ये सब चीज़ें हम देखेंगे क्या क्या होता है। चार्ट बनाना, कंडीशन, डेटा प्रिंट करना, पावर क्वेरी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद नॉर्मली एक बिल्ड वो करेंगे, सेल्स एक्सेल शीट बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं ये वीडियो को बंद करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगी इसके बाद। चलो बाय बाय।